Scientists have long recognized the incredible diversity within a species, but they thought it reflected evolutionary changes that unfolded imperceptibly over millions of years. The scientists have found certain diversity within species, and these changes that took place within a long period of time were not very much palpable or very much predictable. That divergence between population within a species was enforced, according to Ernest Mayr, in the Great Revolutionary Battles of the 1940s, when a population was separated from the rest of the species by a mountain range or a desert, preventing breeding across the divide over geological scales of time. Without the separation, gene flows was relentless, but as the separation persisted, the isolation population grew apart and स्पीशिएशन ऑर्किड मान लीजिए एक सैम्पल साइज़ है यहाँ पे ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं ठीक अब ये स्पीशीज़ के बीच में अगर एक ज़बरदस्ती एक दीवार खड़ा कर दूँ तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ आ जाएंगे यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ आ जाएंगे तो इन दोनों के बीच का जो जीन फ्लो है वो बंद हो जाएगा दे विल नॉट क्रॉस ब्रीड और काइंड ऑफ रिप्रोड्यूस among themselves and they will grow in their own environment they will grow on their own environment so these two will generally diverge into two different sects and speciation or a diversity will dawn so this is the crux of this first paragraph और ये कह रहे हैं कि अगर ये दीवार अगर नहीं होती अगर दोनों के बीच में कोई अगर फिजिकल सेपरेशन नहीं होता फॉर एग्जांपल इफ देयर नॉट हैव बीन एनी माउंटेन और डेजर्ट देन द जीन फ्लो वुड हैव बीन वेरी मच रिलेंटलेस वेरी spontaneous so let's come to the next paragraph in the mid 1960s the biologist Paul Ehrlich author of the population bomb in 1968 and his Stanford University colleague Peter Raven challenged Mayr's ideas about speciation. They had studied checker spot butterflies living in the Jasper Ridge biological preserve in California, and it soon became clear that they were not examining a single population. So there are two people, Paul and his friend Peter. So these two guys are here, and what they did that they challenged the beliefs of Mayr's idea of speciation. How? Let's see. They had studied checker spot butterflies living in the Jasper Ridge. So they checked, they observed a few butterflies. Okay, they were the samples. They were experimenting on them. So they observed them, and something and observed a certain kind of feature, a kind of cycle that repeated. What was that? Through years of capturing, marking, and then recapturing the butterflies, they were able to prove that within the population spread over just across of suitable checker spot habitat, there were three groups that rarely interacted despite their very close proximity. So instead of a very small area, we saw that there were three different genre of butterflies present. So this was one pattern, this was one pattern, and this was one pattern. So the area was small, and there were no physical separation in between. But still, we found that in this small area, there were three different kind of butterflies of the same species residing, having different characteristics. So that is one thing that challenged Mayr's idea directly, because you see that because Mayr said that until there is no physical boundary present between in somewhere in this habitat, there cannot be a kind of a species speciation. The phenomena of speciation cannot occur, or species diversity cannot proceed. But here in this space, you see there is no any physical boundary present between these different butterflies, but yet we find that there are different characteristics of butterflies that are found here. So that directly challenges Mayr's idea of species diversity. So let's go further. Among other ideas, Ehrlich and Raven argued in a now classic paper from 1969 that gene flow was not as predictable and ubiquitous as Mayr and his cohort maintained, and thus evolutionary divergence between neighboring groups in a population was probably common. So what is said is this. So now these two people, Ehrlich and Raven, now they are challenging the ideas that was very much predominant due to Mayr
what did they say? They say that they say that gene flow was not as predictable and ubiquitous as Mayer said. So as Mayer said that in a population, as when you read Mayer, you will find that as per his idea, whenever there is a kind of species or a kind of population present in an environment without any physical separation in between them, then gene flow was very much ubiquitous or very much evident that that is something that will occur. But the research of Eldridge and Raven on the butterflies shows how gene flow was not very much predictable and ubiquitous. And thus, evolutionary divergence between neighboring groups in a population was probably common. So, another thing that comes up is evolution divergence between neighboring groups. So groups that are present side by side or like in the same vicinity or in the same habitat, evolution divergence is even possible in these kind of population where there is no physical separation in between. They also asserted that isolation and gene flow were less important to evolutionary divergence than natural selection. So one more thing that comes up, that that isolation is not needed, and gene flow and isolation were two factors that are comparatively less important than natural selection. Why? Because we saw that in this previous experiment, in this previous observation, though there was no isolation of the species, gene flow didn't occur. So gene flow and isolation are not two major factors that leads to speciation or species diversity. So rather than that, natural selection is more important. Natural selection is something which is more dominant in deciding the species variation or the diversity. What are the natural selection factors? Factors such as the mate choice, weather, disease, predation cause better adapted individuals to survival. So these are something that are a more significant factor that decides species variation rather than isolation and gene flow. So for example, Eldridge and Raven suggested that without the force of natural selection, an isolated population would remain unchanged, and that in other scenarios, natural selection could be strong enough to overpower gene flow. So the same ideas repeats over here, that even in isolated population, the species diversity would not occur if natural selection is not present. So again, the same idea is superimposed or further extrapolated, that natural selection presides over gene flow and isolation. Let's look into the questions. Which of the following best sums up Eldridge and Raven's arguments in their classic 1969 paper? 1969 पेपर से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है, जो अभी हमने पढ़ा था कि natural selection is primary factor, is a bigger factor than gene flow and isolation in deciding species diversity. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अर्नेस्ट मेयर वॉज रॉन्ग इन आइडेंटिफाइंग फिजिकल सेपरेशन एज द कॉज ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी. ये गलत स्टेटमेंट है. क्यों गलत स्टेटमेंट है? देखो, फिजिकल सेपरेशन जब होगा तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी होगी. बात ये नहीं है कि आपके आइसोलेशन से स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं होगी या होगी. बात ये है कि लाइक कितना होगा, क्वांटिटी की बात है. विच इज़ मोर डोमिनेंट फैक्टर, जीन फ्लो एंड आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन? होता दोनों से ही है. इट्स जस्ट दैट नेचुरल सिलेक्शन प्लेज अ वाइटल रोल. सो इट्स नॉट दैट कि स्पीशीज डाइवर्सिटी और फिजिकल सेपरेशन में कोई लिंक नहीं है. जस्ट दैट नेचुरल सिलेक्शन इन दिस केस प्लेज अ ग्रेटर पार्ट. ओके, सो ही वॉज नॉट रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट. Checker spot butterflies in the 50-acre Jasper Ridge Preserve form three groups that rarely interacted with each other. ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? Which the following best sums up the Eldridge and Raven's argument in their classic. तो आपको इस एक्सपेरिमेंट का फाइनल कंक्लूजन बताना है कि आपने क्या डिडक्ट किया. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अब देखो ये क्या, दिस इज समथिंग विच इज ट्रू. बटरफ्लाइज थे, ये वाला जो आपका सेकंड पैराग्राफ में जो एग्जांपल था कि एक छोटे से स्पेस में अलग अलग बटरफ्लाइज, अलग एक ही स्पीशी के अलग अलग
फीचर वाले आपके बटरफ्लाइज मिल रहे थे, जबकि इनके बीच कोई भी फिजिकल सेपरेशन नहीं था। ठीक है, तो बात यह है कि तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता ये चलता है कि एक नेबरिंग हैबिटेट में जहाँ पे कोई फिजिकल सेपरेशन नहीं है, वहाँ पे भी स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। अब एक बात समझिए, अगर मान लो कि मैं क्लास में आता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, मैं सर से पाँव तक भीगा हुआ हूँ, तो आप यहाँ से क्या डिडक्ट करोगे कि हो सकता है बाहर बारिश हो रही हो, या सीधा सर बाथरूम से आए हो, या सीधा सर नहा के आए हो, वट। ठीक है, सो व्हाट इज द, तो आपने ऑब्जर्व किया कि सर भीगे हुए थे, और फाइनली आपकी कंक्लूजन क्या है, आपकी कंक्लूजन आपसे मैंने पूछा कि कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, क्या आपने फाइनली डिडक्ट करते हो इसको देख करके, तो आप कहोगे कि लाइक सर आप शायद बाथरूम से नहावा के आ रहे हो, या फिर आप शायद मे बी आप भीग गए हो, बारिश हो रही होगी। ठीक है, सो उसी तरह से दिस इज समथिंग दैट दीज गाइज ऑब्जर्व्ड। नंबर बी, दिस इज समथिंग दैट दीज गाइज ऑब्जर्व्ड। इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि फिजिकल सेपरेशन की ज़रूरत नहीं है स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए हमेशा। ठीक है, सो आप समझ रहे हो ना ये क्यों नहीं होगा, because it is the question is not asking what they observed, but finally what was their final conclusion, their final argument on this. Number C, while a factor, isolation was not as important to speciation as natural selection. क्या मतलब है इसका? स्पीशिएशन का मतलब मैं समझा दूँ, स्पीशिएशन और स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब वही होता है कि एक स्पीशी दो अलग अलग फीचर्स लेकर, मान लो ये एक स्पीशी है, दिस इज ए, दिस इज टर्निंग इनटू बी एंड सी, बट स्पीशीज रिमेन द सेम, बट बी और सी में अलग अलग इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से अलग फीचर्स आ गए, दिस इज स्पीशिएशन। ठीक है, अच्छा, अब नंबर सी में क्या चल रहा है? While a factor, isolation was not as important to species as natural selection. Exactly, this is what is observed from this experiment. कि आइसोलेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन डिसाइडिंग स्पीशिएशन और स्पीशीज डाइवर्सिटी। नंबर डी क्या कह रहा है? जीन फ्लो इज लेस कॉमन एंड मोर इरेटिक दैन मेयर and his colleagues claimed. This is not something what we can infer from this 1969 experiment. No, because gene flow is less common and more erratic है। किस केस में? मतलब यहाँ पे आप जब तक कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप बता नहीं पाओगे। लाइक जीन फ्लो और नेचुरल सिलेक्शन को साइड बाय साइड रख करके इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है, ना कि सिर्फ जीन फ्लो के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो कंपैरेटिवली डी से कई गुना बेहतर आंसर सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्सेप्ट। सो कौन सा यहाँ पे बेहतर है, हमें देखना है कि एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। एक्सेप्ट में क्या करेंगे हम लोग? सो जो पैसेज से अलाइंड नहीं है, जो पैसेज के आइडिया को फॉलो नहीं करता है, वो हमारा आंसर बनेगा। लेट्स सी व्हिच ऑफ देम गोज विद द पैसेज। जीन फ्लो कंट्रीब्यूट्स टू एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। यस, जीन फ्लो से एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस होता है, अभी हमने पढ़ा। कम होता है वो बात की बात है, लेकिन होता तो है। Now, the population bomb question dominant ideas about species diversity. This is wrong. This is wrong. ये नहीं है। क्यों? आप देखो जरा यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो। Look at this. In the mid-1960s, the biologist Paul Ehrlich, author of the population bomb, look at this line, ये डैश को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ये डैश यहाँ पे ऑन हो रहा है, यहाँ पे ऑफ हो रहा है। So, and his Stanford people colleague Peter Raven challenged. So these two guys challenged Mayer's idea. These two guys challenged. This didn't challenge the idea. ये हमें नहीं पता, ये बस बोल रहे हैं कि पॉल एलरिच है, इसके राइटर हैं, he is the author of this. But this paper challenge किया था कि नहीं मेयर्स के आइडिया को, ये हमें नहीं पता। These guys challenge it, ये हमें पता है। समझ में आया? So this is something which is factually wrong. So this research paper didn't question or challenge the beliefs of the mayor. It was these two people who challenged it. Next, evolutionary changes unfold imperceptibly over time. Yes, हमें पता है ये चीज़, हमने पहले लाइन में ही देखा था, ये चीज़ दिया हुआ है। कहाँ है? That evolutionary changes unfolded imperceptibly. ठीक है, तो यानी कि जो एवोल्यूशन होती है वो बहुत ही अनपैल्पेबल वे में या फिर लाइक वेरी अनप्रडिक्टेबल वे में होती है। जब पैसेज
के अंत तक भी हमने ये चीज़ देखा कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फैक्टर दैट डिसाइड्स. There are multiple factors that decides whether species diversity will occur or not, kitna hoga, kaise hoga. So definitely it's not something that can be predicted easily. So this conclusion still remains at the end of the passage. Now finally, checker spot butterflies are known to exhibit species while living in close proximity. Yes, हमने देखा सेकंड पैराग्राफ में कि एक जगह रहने के बावजूद, इन बिना किसी फिजिकल सेपरेशन होने के बावजूद, they showed species diversity. So number B becomes my answer. So B is something which is not aligned with the idea of the passage. Now, final question number 3. The author discusses Mayer, Eldridge and Raven to demonstrate that. तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे आपको सारे साइंटिस्ट का एक साथ, आप देखे होगी लाइक एल्ड्रिच और रेवन मिल करके मेयर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मेयर के आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे. तो लेकिन यहाँ पे जब आप तीनों को देख रहे हो तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया पकड़नी है, कोई नैरो आइडिया मत पकड़ लेना जो स्पेसिफिकली मेयर से रिलेटेड हो या फिर एल्ड्रिच से या फिर रेवन से रिलेटेड हो. एक ऐसा आइडिया जो कि इन तीनों से रिलेटेड हो. तो ये तीनों अगर मैं आपको एक शैडो आंसर बताने बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? इन तीनों का जो वर्क था वो कहीं ना कहीं स्पीशीज डाइवर्सिटी पर था. यस, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है ये बात की बात है. लेकिन मेजरली अगर मैं देखूं ऊपर तो ये कहीं ना कहीं एवोल्यूशन से स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में तीनों लोग मिलकर के बात कर रहे थे. लेट्स सी विच ऑफ द ऑप्शन सूट्स माय शैडो आंसर. Evolution is a sensitive and controversial topic. No, this is not the main idea. और ऊपर से कंट्रोवर्शियल है और सेंसिटिव है कि मेंशन्ड भी नहीं है. दिस इज नॉट द एम ऑफ दीज थ्री authors being mentioned in the passage. Next, Eldridge and Raven's idea about evolution divergence are widely accepted by scientists. No, this is not the reason why these the names of these scientists have been posed, and also they are widely accepted by scientists. ये हमें नहीं पता है, so factually गलत है ये सारे. Number C, the cause of speciation are debated by scientists. Okay, तो इन तीनों के अलग अलग देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक इंटायर आइडिया को कवर कर रहा है. देखो मेयर जो था उसका आइडिया अलग था, उसका स्पीशीज डाइवर्सिटी पे उसके थियरीज अलग थे. वो कहता था कि लाइक जीन फ्लो एंड this physical separation is the most crucial factor in deciding species diversity. While इन लोगों ने कहा, एल्ड्रिच और रेवन ने मिलकर कि नहीं, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्राइमरी फैक्टर. तो हमें इससे ये चीज़ ज़रूर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं तीनों साइंटिस्ट का नाम इसलिए बताया गया है कि एक डिबेट है, एक पजल है जो कि एवोल्यूशन को लेकर के, स्पीशीज डाइवर्सिटी को लेकर के चल रहा है, जो कि अनसॉल्व रहा है. सो यस, दिस इज समथिंग that covers the entire essence of the passage. Ki yes, there is a controversy regarding this, or not controversy, there is a kind of unparalleled divisions among the scientists regarding this species diversity theory. तो एक दूसरे पे अग्री नहीं करते हैं लोग, ये सही बात है. तो एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे हैं मतलब क्या, यहाँ पे सारे साइंटिस्ट आ गए, 1 2 3 जितने भी साइंटिस्ट सारे एक दूसरे से एक अलग अलग थियरीज रख रहे हैं. ऑब्वियसली नंबर सी इज समवेयर suiting the sentiment of the passage. Number D, the checker spot butterflies offer the best example of Eldridge and Raven's idea about speciation. ये बेस्ट दो बातें, पहले तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि नहीं हमें नहीं पता. दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों के आइडियाज़ को कवर कर रहा है. मेयर्स बेचारा यहाँ पे छोड़ दिया इन लोगों ने. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. हमें कैसा आंसर ढूंढना है जिसमें तीनों के कंट्रीब्यूशन के बारे में कहीं ना कहीं एक आइडिया दिया जाए. सो नंबर सी इज समथिंग दैट सूट्स द ओवरऑल एस्पेक्ट of the passage. Okay, thank you for today. Goodbye. Have a nice day.